life got changed when I became selfish. Because I said, I'm sorry, I'm not willing to listen to what my dad is doing, what my mom is doing, what the muashra is doing, what my teacher is saying, until and unless I know the truth myself. तो मेरे अब्बू ने ये कर दिया, मेरी अम्मा ने ये कर दिया, मेरे टीचर ने ये कर दिया, मेरे you don't love me, you don't care about me. हाँ, अगर मैं किसी अमीर के घर में पैदा हुआ होता तो मेरी जिंदगी बदल गई होती. Research is telling you something totally in contrast. 99.9% people who are currently living in this world, and they are mega successful people, they are those people who are the first generation millionaires. And interestingly, all of them are high school dropouts. The people who became somebody today, they were literally crazy. They wanted to do something. And later on, they also got to know what. But it just started off with, I am sorry. I refuse to take this life anymore. I have to do something. So I think the road to success also means Ihdina Sirat al-Mustaqim. This is the road. This is also the name of my first book back in 95, now translated in 9 languages. This is one of the best seller book produced in Pakistan, translated in 9 languages. Now everybody is looking for success, right? Any one of you not looking for success, please raise your hands. किसी को success नहीं चाहिए तो हाथ खड़ा कर लीजिए. How many times did you try to search Google the word success? Please raise your hands in the last 1 week. हाथ खड़ा कीजिए, पिछले एक हफ्ते में आपने गूगल पे जाके सक्सेस का वर्ड कितनी दफा सर्च करने की कोशिश की. Please raise your hands. Now this is the issue. You see, this is the diagnostic of the society. You're looking for success, but what is the time commitment which you have made to find what is success? If you're looking for success, then you should go crazy to find out success. Google success, 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 and there will be millions of sites coming in front of you, and you will never be able to skip the road to success. हम समझते हैं कि किसी दिन हम बस बैठे रहेंगे, वही आएगी, खाते हम कुछ और रहेंगे, रिजल्ट कुछ और निकलेगा. बोएंगे हम कुछ और, बोएंगे हम कीकर, खाएंगे हम आम. बिस्तर पे लेटे लेटे किसी दिन वही आएगी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे, हमारा हाथ उठाएंगे और हमें बिल गेट्स के साथ जाके खड़ा कर देंगे. तो आई थिंक दैट टाइम इज नेवर गोना कम, माय डियर. 20 साल में तो नहीं आया, 20 साल से तो मैं मार्केट में आई बीन चैलेंजिंग एवरीबॉडी कि ओके फाइन, बी माय गेस्ट, डू इट. So when was the last time, if you are looking for success, my dear, how can you skip this book which has been in the market, produced by a Pakistani, translated in 9 languages, people have gone crazy worldwide, इंटरनेट पे जाके रोड टू सक्सेस टाइप कीजिएगा, उसकी ट्रांसलेशन देखिए कितनी ज़बानों में है. और ये आपके शहर में, आपके मुल्क में एक रहने वाला एक बेचारा बेबस सा आदमी, उसकी कहानी की स्टोरी है, हाउ ही मेड सक्सेस आउट ऑफ हिम. So if you are looking for success, what did you do? You want something else and you do something else. चाहिए कुछ और, करना कुछ और, फैसला कुछ और, ख्वाब कुछ और, ड्रीम कुछ और. I think that's also one of the issues. So I think this is going to give you some time-tested tools and techniques to tell you what success is all about. And believe me or not, it is not a gimmick. My standing here shows my commitment. अगर मैं आपसे खड़ा होकर कहूँ, पिछले 4 सालों से मैंने संडे भी ऑफ नहीं किया, पिछले 21 सालों से मैंने छुट्टी नहीं की. So I think my standing here on the Sunday shows you something. Okay, this is what is, just imagine what would be the cost of organizing all these events. ना मैंने सियासत में आना है, 20 साल से मैं लिख चुका हूँ, ओथ देने को तैयार हूँ. I advise everybody, but I have absolutely no interest in siyasat. I am fortunate enough to advise all the parties, and I know where they're going wrong, and I will know they will continue going wrong. So मुझे क्या मिलना है यहाँ पे खड़े होके अपना टाइम देके, flying all the way from Karachi, Lahore to Karachi, and just trying to tell you something, because I know that my reward is guaranteed. My reward is not going to be on the basis of how many people changes, but my reward is going to be based on my effort toward making the difference in the quality of life of people of the same country, of my motherland. This is what I am doing. So this is not economically viable project.
Teaching in Pakistan, anything to do with teaching, anything to do with अच्छाई. Pakistan में anything which is अच्छा, it cannot be economically viable project. Feasibility उसकी कोई नहीं है. You have the worst of the product and you have the corrupt of the lead practices and you have a chance to survive and chance to succeed. आपके पास दुनिया की बदतरीन सबसे घटिया किस्म का डांस करने वाला भी कोई उठा के ले आइए, वो 1 महीने में इस मुल्क में कामयाब हो सकता है. But because there are people who are so depressed, they are so disappointed, they are so stressful, they would go do anything. क्रिकेट के मैच के लिए गुर्दे भेज देंगे अपने. It shows you the actually of the society. कि where they are spending money. Everybody is spending money somewhere. But life is about making the right choice. We don't even have that caliber to make the right choice. But everybody is spending money. हर बंदा कहीं ना कहीं तो पैसे खर्च करता है. 100 रुपए के टिकट पे करता है, 200 रुपए के टिकट पे करता है. Somebody told me, यहां पे रात कोई प्रोग्राम मुझे बता रहा था कि a group of ladies called कि अच्छा हमने आना है, प्रोग्राम पहले बता दीजिए अच्छा होगा कि नहीं होगा. क्यों जी अच्छा, देखिए ना हमने वो एक नई कोई मूवी आई है शुएब मंसूर की, हमने तो वो देखने जाना था, तो वही काम ओवर, प्लीज अश्योर अस कि प्रोग्राम अच्छा होगा. यार वो क्या बात है, सुभान अल्लाह. व्हाट टाइप ऑफ गारंटी यू वांट, द गारंटी ऑफ माय लाइफ? डिड यू आस्क द सेम गारंटी फ्रॉम शुएब मंसूर कि मैं आ रहा हूं मूवी देखने के लिए, अगर ये मूवी खराब हुई ऐसी की तैसी मैं लाख रुपया वापस लेके जाऊंगा? मुझसे आप गारंटी मांग रहे हैं. दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर हियर. And then you are afraid, then you are worried, then you are thinking, then you have anxiety, then you have fears. What is going on? So I'm telling you what is going on. Fix your qibla. इहदिना सिरातल मुस्तकीम. नमाजों में दुआएं मांगे, रोए पिटे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम. राम इकबाल कहते थे किसी का नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन. सेल्फिश बनो खुदा के वास्ते. इफ यू बिकेम सेल्फिश, योर लाइफ इज टर्न अराउंड. हम तो इतनी बेवकूफ हैं कि हम खुद गर्ज भी नहीं. क्योंकि अगर आप में से सारे खुद गर्ज होते, माई लाइफ गॉट चेंज्ड व्हेन आई बिकेम सेल्फिश. बिकॉज आई सेड आई एम सॉरी, आई एम नॉट विलिंग टू लिसन टू व्हाट माई डैड इज डूइंग, व्हाट माई मॉम इज डूइंग, व्हाट द मुआशरा इज डूइंग, व्हाट माई टीचर इज सेइंग, until and unless I know the truth myself. I started my life from a clean slate. I will find the truth, and 99% of the so-called truth available, then I prove them to be wrong. 99% जो truth मुझे बताए गए थे, they were wrong. Absolutely no basis. Transferred generation after generation after generation without anybody testing the integrity of those beliefs. And that's how people are moving. Or that's what exactly Quran said. Would you continue doing what your forefathers were doing without even taking a minute to think if they were right or wrong? क्या तुम वही करोगे जो तुम्हारे बाप दादा करते रहे, ये जाने बगैर कि वो गलती पर थे? सो अगर आप खुद गर्ज हो जाएं, सेल्फिश, और नमाज के बाद दुआ मांगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह आई एम सॉरी, ये फाइज साहब कुछ और कह के चले गए, वो फलाना आता है वो कुछ और कह देता है, वो टमगाना आता है वो कुछ और कह देता है, किताब में ये लिखा हुआ, बिल गेट्स वो करता है, अल्लाह आई एम टोटली स्टक. इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे. सिरातल लज़ीना अनअमता, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने नाम किया. पीपल हु बिकेम सक्सेस, जिनको आज आप बिल गेट्स कहते हैं, फेडेक्स कहते हैं, सैम्स वॉल्टन कहते हैं, हार्लैंड सैंडर्स कहते हैं, सुचीरो होंडा कहते हैं, उन लोगों का रास्ता. पीपल हु वर ब्लेस्ड हियर, ना उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने गजब किया. तो इसमें क्या बुराई है? मैंने तो आपसे ये नहीं कहा कि आप मेरी बात माने, मैं तो आपसे कह रहा हूं खुदाया सेल्फिश हो जाएं और अल्लाह से हिदायत मांगे. बिकॉज यू कैन सिट हियर, you can listen to me, you can read something, you can watch something, but remember, at the end of the day, the result is something which Allah subhanahu wa ta'ala has held in his own hands. और result क्या है? The wisdom. आप पढ़ सकते हैं, you can become the information collector. Everybody seems to know everything. So there is so much information and people cannot even differentiate what is the difference between information and knowledge and wisdom.
सो जो विस्डम है, अल्लाह कहता है दिस इज समथिंग, if I give it to you, this is the best and the best and the best of the gift anybody can have. जिसको अकल हदायत मिल गई, इससे बढ़ के दुनिया में कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, because everything else is a result of that wisdom. तो अल्लाह कहता है this is something I have held in my own hands and I will give it to somebody I want. And then Allah says I will give it to them who strive for it. जो इनके मुफ्त की चीजें, पत्थरों पे, सड़कों पे रोड़े मिलते हैं, हीरे नहीं मिलते। सड़कों पे पड़े हुए आपको पत्थर मिल सकते हैं, हीरे नहीं मिल सकते। तो जो सड़कों पे आपको चलते चलते नॉलेज मिल जाता है ना, टिप्स मिल जाती हैं, वो पत्थरों जैसी ही टिप्स मिल सकती हैं आपको। ऐसे ऐसे फोन आते हैं खड़े खड़े, एक्सक्यूज मी सर, सलाम अलैकुम सर, फाइज साहब प्लीज एक सवाल का जवाब दे दे, एक सवाल का जवाब दे दे सर, मेरी जिंदगी रुकी हुई है बस सर 1 मिनट में। मैंने कहा यार तुम्हारी जिंदगी रुकी हुई है, तुम्हें 1 मिनट में जवाब चाहिए, 1 मिनट में फिर यही जवाब हो सकता है, गो एंड फाइंड आउट। दैट्स ऑल। दिस इज अ लेवल ऑफ अ कमिटमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज टेलिंग मी दैट हिज लाइफ इज स्टक एंड इज ओनली विलिंग टू इन्वेस्ट 1 मिनट टू फाइंड द आंसर। उसकी जिंदगी सो कॉल्ड रुकी हुई है, वो सिर्फ 1 मिनट सड़क पे चलते चलते मुझे सवाल पूछ के अपनी जिंदगी, 1 मिनट में क्या मैं किसी की जिंदगी बदल सकता हूं या क्या कह सकता हूं। तो इस किस्म की एडवाइसें लेने वाले हैं कि जिंदगी हमारी रुक जाती है, बट हमें चलते चलते 1 सेकंड की एडवाइस चाहिए। 1 सेकंड की एडवाइस ऐसे ही मिलेगी आपको जैसे सड़क पे चलती, उसका कोई फायदा नहीं। कोटेशंस आ जाती हैं, SMS आ जाते हैं, रोज के ढेरों के हिसाब से चीजें आ रही होती हैं, बड़ी बड़ी, सबको सब ये इंफॉर्मेशन है। How that information is interpreted in the modern time, that is something which you have to learn. So my dear, this road to success is a mixture of the global best practices unchallenged for the last 20 years since I have authored them, and unchallenged for the last centuries as long as the law of nature are prevalent. My job was only to gather them, to bring them under one umbrella. So I'm not claiming the credit. I'm simply saying my job is to surrender to the truth. I discovered the truth called laws of nature and how they are or could be interpreted in becoming success. So वो road to success है। और इसी तरीके से how the laws of nature could be interpreted in having a better marriage life, तो वो second किताब है, Together Forever, and how, so that is the kind of a work which I have been doing. Why to reinvent the wheel? This is a kainat, this is a universe created by somebody. Now the somebody also knows how to get the best out of this universe. एक गाड़ी आप खरीद के आते हैं, you may or may not like it, but the guy who has manufactured the car, he also hands over to you a manual called instructions booklet. It says that's how you can get the best out of this car. And you surrender to the truth told to you by that guy who has manufactured the car. He tells you कि इसमें पेट्रोल ऐसा डलेगा, 3000 किलोमीटर के बाद you will get the oil changed. रेडिएटर के अंदर आपने ये नहीं डालना, वो डालना है, and you don't argue. You just surrender to what he is telling you. You don't practice anything new. आप रेडिएटर में पेट्रोल डालने की कोशिश कभी नहीं करते। You just listen to that guy. You believe that the one who has manufactured the car also knows how to get the best out of the car, right? But when it comes to you, I think you don't even know maybe who is your manufacturer. जिंदगी आपकी है, मैन्युफैक्चरर ऊपर बैठा हुआ है, और आपकी जिंदगी कैसे ठीक होगी? आप जाते हैं डॉक्टर के पास, हकीम के पास, पीर के पास। Isn't it strange? Does it make sense to you? बनाने वाला वो बैठा हुआ है, बताने वाला आपको ये बताएगा। ये पीर फकीर बैठा हुआ, वो मुल्ला बैठा हुआ है, वो डॉक्टर बैठा, वो साइकेट्रिस्ट बैठा, वो साइकोलॉजिस्ट बैठा, वो आपको आपके जिस्म के बारे में ज्यादा बेहतर अल्लाह से बता सकता है। चलें, as long as he is telling you something which is also in accordance with the laws of nature, fine. But if he is telling you something which is totally in contrast to what Allah subhanahu wa ta'ala has ordained, कि अल्लाह ने कहा हो था कि इधर पेट्रोल की जगह डीजल ना डालना, गाड़ी तुम्हारी जैम हो जाएगी, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आज तुमने डीजल पीना है, एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट,
So then who you would listen to? And I've seen, every day I see those people who are doing things totally in contradiction with the laws of nature. And बुराई इसके ऊपर ये है, जुल्म सितम ये है कि they believe that this is the right. And this is a state which was told to us, narrated in the books, as a state which is said to be the worst stage to be in. And the stage is people don't know. And they don't even know that they don't know. But they believe that they do know. कहते हैं किसी मुआशरे की तबाही के लिए वो स्टेज, ये दिस इज द वर्स्ट स्टेज टू बी इन, कि पीपल डोंट नो दैट दे डोंट नो बट द थिंग दे डू नो. लोगों को नहीं पता कि वो नहीं जानते, लेकिन वो ये जानते हैं कि वो जानते हैं. तो हमारी स्टेज वो है. सो ये शायद आपकी कुछ बिलीफ्स चेंज करने की कोशिश करेगी. सो दिस प्रोग्राम द वेरी फर्स्ट रोड टू सक्सेस आई डिलीवर्ड इन 93. It has taken me so many years to come to Karachi because जहां पे एक प्रोग्राम होता है वहां पे इतना रश पड़ जाता है उसकी सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में कि उस शहर से निकला ही नहीं जाता. So road to success, first time it happened and we did hundreds of road to success. अखबारें भरे होते थे 1993 में, 1993 बुक 95 में आई हुई है. So ये प्रोग्राम करते करते in the last about 17-18 years, the program itself has transformed and it has taken many different shapes. Fundamental principles are still the same. However, we keep on changing the methodology and examples and इसके जो pillars हैं are trying to adjust a different crowd. For example, if we were conducting the road to success for the corporate world, then it would be a very different program altogether. Principles would be same. If we're doing it for student in 2 hours, it would be different. अगर हम इसको 24 घंटे की वर्कशॉप कर रहे हैं रोड टू सक्सेस पे, तो इट वुड बी डिफरेंट. सो ये होता है. तो बेसिकली वो चेंज उसका प्रिंसिपल हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्रिंसिपल मेरे इख्तियार में है नहीं. लॉज ऑफ नेचर नेवर गेट्स चेंज. With these words, I think let's move on with the first principle of success. I think one of the things which you have to do right now if you want to become successful, and this is I think common. So this study was actually based on our observation of the people throughout the globe. All those people who became literally they became successful. दुनिया में वो लोग जो जीरो से हीरोज बने, this is the result. Road to success is the result of our study on their habits and their lifestyles. जिसमें people like Bill Gates, General Electric, Jack Welch. So the very first thing which you have to understand is that this is success is a social science subject. It's not a physical science. It means that the best way is not a research. The best form of research is not desktop research, but an action research. तो ये प्रोग्राम एक्शन रिसर्च है कि बजाय इसके कि मैं थ्योरी बना के उसको टेस्ट करूं, हाइपोथेसिस डेवलप करके उसको मार्केट में टेस्ट करूं, ये प्रोग्राम बना ही उन लोगों को देख के पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, अ स्टडी ऑफ देम टू फाइंड आउट कि अच्छा हाउ समबडी बिकेम सक्सेसफुल. सो ये प्रोग्राम इट इज द अदर वे अराउंड. आपने किताब में फिजिकल में मेडिकल केमिस्ट्री में एक रिसर्च पढ़ी, यू गो एंड टेस्ट इट आउट. ये प्रोग्राम उल्टा है. ये प्रोग्राम में ऑलरेडी पीपल आर सक्सेसफुल देयर. बिकॉज पीपल आर सक्सेसफुल, आवर जॉब इज जस्ट टू फाइंड आउट कि हाउ दे बिकेम व्हाटएवर दे बिकेम. सो इट वाज ऑलरेडी बेस्ड ऑन द एक्शन रिसर्च. तो एक्शन रिसर्च क्या होती है वो आपको मैंने बता दिया. विच समबडी हैज डन टू देम. ओ मेरे अब्बू ने ये कर दिया, मेरी अम्मा ने ये कर दिया, मेरे टीचर ने ये कर दिया, मेरे यू डोंट लव मी, यू डोंट केयर अबाउट मी. हाँ, अगर मैं किसी अमीर के घर में पैदा हुआ होता तो मेरी जिंदगी बदल गई होती. Research is telling you something totally in contrast. 99.9% people who are currently living in this world and they are mega successful people, they are those people who are the first generation millionaires. And interestingly, all of them are high school dropouts. About 99% of those people are high school dropout. It means that the success has absolutely no link with your education, or you're grooming in a privileged environment, or you're going to an English medium school. It has absolutely no link. And in fact, if you are more privileged, you will not have that inner motivation to do something.
बिकॉज अगर आपको घर में नाश्ता मिल ही जाना है, अब्बू ने घर से कान पकड़ के बाहर निकालना ही नहीं है, तो आप रोज कहेंगे अच्छा मैं कल करता हूं, मैं परसों करता हूं, मैं फिर देखता हूं, हाँ सक्सेस होनी चाहिए। जब अब्बू से कहता हूं नई गाड़ी ले दें फिर सक्सेस मिल जाएगी। गाड़ी कमरे का अगर एसी चेंज हो जाए तो क्या बात है, आई विल एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर। इफ आई हैड अ न्यू लैपटॉप विद मी, आई विल एबल टू डू बेटर रिसर्च ऑन गूगल। ये आप लोगों के हाइपोथेसिस हैं लाइफ के बारे में। एंड इफ अब्बू सेज नो बेटा आई गेव यू दैट लैपटॉप, व्हाट डिड यू डू विद दैट? अब्बू वो पुराना हो गया, वो DV6 था, आजकल DV9 का जमाना है, तो DV9 से क्या गूगल पर रिसर्च बेहतर हो जाएगी? दिस इज अ क्वेश्चन। If you did not do anything with DV6, what would you do with DV9? And the people who became successful, they are not those who were sitting there under KESC light. They are those people who used to travel about 20 miles just to prepare for their exams sitting under a street light. You know, if you have that attitude, it's all about attitude. It's not about anything else. You want to become something, a person like me who was so quiet in his life, I would not speak a single word. And I took a challenge. And I said, okay, fine. I went there and I was told, this is elite forum, National Speaker Association in Philadelphia in America. It's a very elite forum where they have about 2,500 worldwide renowned speakers. None of them is Asian. It's such an elite gathering, and they're so conservative in taking people in. You have to, and I'm talking about those speakers who would be paid about $40,000, $50,000 US for a 60-minute speech. That level, millions of dollars they are being paid for a 60, 90-minute speech. And I wanted to become the member of that forum. And there is absolutely no precedent. Nobody. If Russia. So how do I do? So do I blame my parents? Do I blame the school? Do I blame what do I do? Nothing. So I accept the responsibility. Okay, I will do every single thing, whatever it takes me to get there. So if I can do that, coming from a Urdu schooling background, becoming the only Asian member of the National Speaker Association. I mean, you can see the difference between a trainer and a speaker. Speaker has their own message, not dependent on the slides. It is something which is coming from my heart. I have seen it happening to me. This is my knowledge. I cannot stand here and teach you Dr. Stephen Covey. I am teaching you myself. So this is the very first lesson of becoming the master speaker. You have to have your original message, which you can speak, which people are willing to buy, people are willing to listen to you, and then you have to keep them on their toes for hours and hours and hours. 60 मिनट से ज़्यादा आप किसी का लेक्चर नहीं सुन सकते. So if you are willing to listen to somebody for 6 hours, 8 hours, 10 hours, 12 hours, he would definitely be a master speaker. So I wanted to become the member of that forum called National Speaker Association. So I did every single thing you could have, but I accepted the responsibility of my life. I did not blame or complain about anything in my life. So I said, no, if it is me, so it is me. So responsibility, the word responsibility, I've been told to speak more in Urdu. So I will be now switching to more Urdu. Responsibility, कुछ words ऐसे हैं, I am sorry, I will not able to speak or say it in Urdu right, because जिस लैंग्वेज का फ्रेज होता है वो उसी लैंग्वेज में मायने देता है. तो मैं कोई ऐसी बात जहाँ पे मैं उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज बेयर विद मी. रिस्पॉन्सिबिलिटी की अब इसकी मैं क्या, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसकी मैं इसके उर्दू जिम्मेदारी करूँगा तो मान ही नहीं आएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी, the word responsibility in old English dictionaries is a combination of two words. Ability to respond. How you react to something which happened to you. This is that ability which actually made us humans.
We can choose our response. If you denied this ability in you, अगर आपके मुंह पे कोई थप्पड़ मारे और आप उसको थप्पड़ से ही जवाब दे दें, it means कि you are acting of your impulses. You are not thinking. People can make you do something. So then where comes that thinking part? A stimulus came. Stimulus कुछ भी जानवर के आगे जाके उसे ऐसे करें ना आप, ये आपने स्टिमुलस क्रिएट किया, अब वो आगे कहता this was the response of that animal. Stimulus and there is a response. Now Hazrat Insan is much more that animal. सूरत यूनुस की आयत नंबर 100 अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, people who don't think they're animal, no, but worse than animals. जो लोग सोच नहीं रखते ये जानवर हैं, फिर अल्लाह का खुद ही कहता है नहीं मगर उससे भी बदतर. And this led to a whole theory in sociology. और मैं अपने पास से नहीं बना रहा, दिस इज अ थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी कि पीपल, कामयाब लोग आर हु हैड अ स्टिमुलस, दे थिंक एंड पॉन्डर, दे चूज द रिस्पॉन्स एंड देन दे रिएक्ट, एंड दे आर दोज हु आर कॉल्ड सक्सेसफुल. सो यू गिव मी अ स्टिमुलस, सो आई थिंक इज इट वर्थ इट, डज इट मैटर टू मी, इस काबिल है बंदा, इसका मैं जवाब दूं, गलत फहमी तो इसको नहीं हुई, इग्नोर कर दूं, छुरी मार दूं, थप्पड़ मारूं, ये सारे रिस्पॉन्स है ना जो मैं चुन सकता हूं. सो आई थिंक and I choose the appropriate response. So that ability of me choosing the appropriate response to something which happened to me is the deciding factor, not what happened to me. Are you getting the point? जो मेरे साथ हुआ उससे कुछ भी नहीं होना. मुझे मेरी मां ने घर से निकाल दिया, कुछ भी नहीं होगा. मेरे पास रात को खाना नहीं था, कुछ नहीं हुआ. I was literally thrown out of the job, कुछ भी नहीं हुआ. अभी कुछ नहीं हुआ. फाइनल माउसरन युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानी है. अब इस तकलीफ से जो हुआ मेरे साथ, मेरी जिंदगी क्या होने वाली है, या शाम को मैं नींद की गोलियां खा रहा हूंगा, तो या आज इसी लम्हे मेरी जिंदगी बदलने लगी है. इसका फैसला होगा कि हाउ आई चूज द रिस्पॉन्स. डू आई जस्ट सिट देयर एंड कंप्लेन एंड ब्लेम कि मेरे साथ जुल्म हो गया, मैं तो इतना खूबसूरत था, इतना हसीन था, उसने देखो नौकरी किसी और को दे दी, मेरी सिफारिश नहीं थी, मेरे अब्बे ने काम ही कुछ नहीं किया, काश मेरे अब्बा बहुत बड़ा होता, मेरी सिफारिश कर देता, देखता मुझे आज नौकरी से कौन बाहर निकालता है. एक रिस्पांस तो ये हो सकता था. दूसरा रिस्पांस ये हो सकता था कि मैं सारे शहर के लोगों को फोन करना शुरू कर देता, यार मेरी नौकरी जा रही है, कोई है, कोई जानने वाला है, कोई एसपी साहब है, कोई कमिश्नर को जानते हो, या कोई मिनिस्टर है, कोई एमपी है, कोई एमएलए, यार मैं मरा. एक रिस्पांस हो गया. एक रिस्पांस है जॉब, व्हाट डू आई हैव, डू आई नीड इट, आई कैन डू मच बेटर देन दिस, गेट ऑफ. It is Allah's blessing. Allah must be pointing my attention towards something. अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और चुना होगा, इससे बेहतर चुना होगा. I'm sure I deserve much more than what these guys were giving to me, and I'm gonna prove myself. क्या होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाएगी. So this is the third response, the response of the successful people. So it's all about having that response. You know, I have people coming to me and issue is what, एक कहानी सुना रहा हूं. issue is what कि सर आपसे बहुत मीटिंग चाहिए. मीटिंग है क्या जी, मेरी शादी आ रही. तो मैंने कहा यार कर लो शादी, मैं लाइसेंस देता हूँ शादी कराने का. कर नहीं जी मसला है. मैंने क्या मसला है जी, मेरी एक्चुअली 3 दफा तलाक हो चुकी है, तो मैं अब ये सोच रहा. मैंने कहा सुभान अल्लाह, दैट इज गुड, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, so finally you have realized that there is something wrong in you. It took you 3 divorces to understand that there was something wrong in you, and finally you accepted the responsibility. Wow, good.
मैं ओके, व्हाई डोंट यू कम ओवर, ओके। ये हालत है हमारी। 6 नौकरियां चली जाएंगी, पहला रिएक्शन ये है फेल हो जाएंगे, नंबर नहीं आएंगे। ओहो, KESC वालों ने रात की लोड शेडिंग कर दी, मेरा पेपर ही खराब हो गया। मैं जब पाकिस्तान का सदर बनूंगा तो KSC की तो मैं 80 की 80 फेर दूंगा। अब्बू ने कुछ किया ही नहीं, कहा था ना AC घर में लगवा देते हैं, जनरेटर ही नहीं है। 2 जनरेटर होते तो मैं देखता मेरी फर्स्ट डिवीजन कैसे नहीं आती। ये दिस इज अ रिस्पॉन्स वी हैव, easy way. So, that ability to have a positive response is an ability, is an attitude which made them whatever. For example, Bill Gates was asked to leave Harvard Business School. He was literally thrown out. And last year, uski anniversary, 125th anniversary, he was invited by Harvard. और चांसलर साहब उसके पीछे ऐसे फिर रहे थे। और जहां वो स्टेज पे, ये YouTube पे है, ये उसका क्लिप ऐसे आया, एंड द फर्स्ट सेंटेंस ही सेड, इट्स नाइस टू बी एट द प्लेस वेयर आई वाज आस्क्ड टू लिव। He was considered not being capable of continuing with his master's degree, and finally Harvard decided to give him honorary doctorate. उसको MBA के काबिल नहीं समझा था और बुलाया गया कि आप ऑनरेरी PhD ले लें हमसे आके। दिस इज अ रिस्पॉन्स, दिस इज अ रिस्पॉन्स। उससे तो नहीं कहा वो मेरी जॉब जा रही है, मेरा हार्वर्ड जा रहा है, प्लीज सिफारिश कर दीजिए। एंड देयर आर 100 एग्जांपल। द हार्डर यू हिट द बॉल, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, हार्डर यू हिट द बॉल, एक गेंद को जितनी ज्यादा सख्ती से जमीन पे मारेंगे उतना ही ये बाउंस बैक करेगा। और ये है लिटरली उस कुरान की आयत की इंटरप्रिटेशन, फाइनल माउसन युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानी। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आपका इशू ये है कि आपको किसी ने जमीन पे फेंक के ऐसे ऐसे नहीं किया। पीपल हु बिकेम लिटरली सक्सेसफुल, दे वर दोस्त जिनके साथ ये हुआ, they were literally thrown out. गाड़ियां निकाले गए थे, they were rejected, they were dejected people, and they said, oh, okay, thank you sir, I will come back some other day. जब आपके पास चॉइस खत्म हो जाए, you have so many choices. If you have so many choices, you cannot choose. बुफे लगाओ, 15 खाने आपके आगे रख दो, तो आपके पास क्या चॉइस है? आप इधर जाएंगे, इधर एक लुकमा इसका खाएंगे, एक बोटी यहां से उठाएंगे, एक कबाब उठाएंगे, एक टिक्का उठाएंगे, पेट भर जाएगा, वापस आ जाएंगे। बट इफ यू हैव ओनली वन चॉइस एंड आई से ओके, आई गिव यू वन शॉट, I give you one shot, so you will think 100 times before using that shot. अगर मैं आपसे कहूं ये फ्री आपको मिलेगा सैलड, तो आप आंखें बंद करके हर चीज डाली जाएंगे कि चलो जो पसंद नहीं आएगा उठा के फेंक दूंगा। बट इफ आई टेल यू दिस इज द साइज ऑफ द बॉल एंड यू गो देयर ओनली वंस, ये प्याले का साइज है, वो सैलड बार लगी हुई है और आपने सिर्फ एक दफा जाना है उधर। सो यू गो देयर एंड यू थिंक थ्राइस, 3 दफा आप सोचेंगे, अच्छा ये नहीं यार ये बेहतर है, ना ये नहीं, वो वाली चीज खाऊं। So sometime having more choices kills you, and limited choices is something what can really make you think hard, and it is all the game is about thinking, pondering. Afala taqalun, akal karo, afala yatadabbarun, गौर फिक्र करो। ये कुरान बार बार ये जुमला कहता है, गौर फिक्र करो, अकल करो। हमने वो अकल करनी छोड़ दी। So it's not what has happened to you, it is what you do with what happens to you that determines your destiny. आपकी किस्मत इस चीज से नहीं डिटरमिन होती कि किसी ने आपके साथ क्या किया, बल्कि इस चीज से डिटरमिन होगी कि जो किसी ने आपके साथ किया, आपने उसके बाद क्या किया, और वो आपके इख्तियार में। So understanding what you are today is because of you. जो आप हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला
is not going to hold you responsible for anything which you have no power over. जिसकी आपके पास ताकत नहीं थी, अल्लाह ने कभी आपसे नहीं पूछना. You will be asked only of you as a person. You. What did you do? Allah is not going to ask you कि तुम्हारा बाप अमीर था या नहीं था. It's not for you to worry about. It's not for you to think about. वो अल्लाह ने उनसे पूछना, आपसे पूछना है what did you do? So, understanding it is the result. What you are today is the result of what you have given to your life. So stop blaming. एक आदमी जो अपने आप को जिम्मेदार समझे हर चीज का, कि oh, I'm sorry I wasted 5 years of my life. Had I known it earlier, oh, I could have become a totally different person altogether. अगर आपका ये एटीट्यूड हो जाए, then you will have nobody to complain, to blame, or to pass your excuse to. Because it is a killer. Science कह रही है, mind sciences कहती है, the moment you tell yourself, काश ये हो गया, वो हो जाता, ऐसा हो जाता, you program yourself for failure. You program yourself for a failure. क्योंकि आपके दिमाग में इतने इमेजेस बन जाते हैं, इतनी रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं कि जब आपका दिमाग आपको 100 दफा ये ही सुनता है रोज, हाय उसने ये कर दिया, हाय उसने वो कर दिया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया. सो यू डेवलप अ वेरी लो सेल्फ रिस्पेक्ट. क्योंकि एक आदमी जिसको लगे कि ही हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ, ही विल हैव जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट. अगर आपको ये पता चलेगा आप कुछ भी खुद करने के काबिल नहीं है, तो यू विल हैव एब्सोल्युटली जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट. एंड दिस इज अ true state of the affair of Pakistani people. They have zero self-respect, the kind of attitude they show on the street. मैं नहीं कह रहा, books में लिखा. क्योंकि they are totally empty because you have been telling yourself, हाय मुझसे ये हुआ, उसने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया. So I think the very first thing which you have to understand, if it has to change, it is only you. और इसके ऊपर there are so many sayings from Quran. अल्लाह सूरत अनफाल की आयत में देख लीजिए, इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु, बेशक अल्लाह नहीं बदलेगा किसी माँ बिकॉमिंग, किसी शख्स, किसी फर्द, किसी इदारे की हालत को हत्ता जब तक के जगह जो वो खुद ना बदले माँ बेअनफुसिहिम, जो उसके अंदर है, जो उसके दिल में है, जो उसके बिलीफ्स हैं. So the moment your beliefs get changed, you know, it is me and it is only me who can change my life. Change from the inside out, not from the outside in. 67 years से 65 साल से हम इस मुल्क में we are expecting a change from outside in, which is in contradiction with the laws of nature. आप में से कोई किसी को अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, और हम हर शख्स दिन में 50 दफा दूसरों को बदलने की बात करते हैं. अब वो आपने ये क्यों किया, अम्मा आपने ऐसा क्यों नहीं किया, सहेली को कहेंगे तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, टीचर को कहेंगे कुछ और. वी आर ऑलवेज टेलिंग समबडी दैट दे शुड चेंज. My dear, life is not about changing others, life is about changing yourself. When was the last time you told yourself, you taught yourself that I have to change? That's what Quran ayat says, that's what the psychology of peak performance is telling you. Your life will change when you say, it's me, I'm going to focus on how can I do, what difference can I make. Allah is not going to ask each and every one of you, did you change the government of Pakistan, but Allah is definitely going to ask each and every one of you, did you change yourself? You are the CEO of your own life and you don't even realize that. इस मुल्क में आप कुछ भी नहीं है, but you are definitely chief executive officer of your own life. If you could not change yourself being the CEO of your own life, what would you do if I made you the president of Pakistan? You would do nothing. You will literally do nothing. But if you change today yourself, then I think that your life will change because your environment will change and your definition of what was happening around would change. So Islam is all about productivity, and so is the success. Successful people are proactive people. They do things before time. They realize what is coming up. They do things, what I should be doing. They plant small seeds. कामयाब लोग, they plant, because success takes about 20 years to happen. There are no shortcuts for success. And easy comes, easy goes. And the success which you make like this, you fall like this. And I can prove it right standing here.
Show me a single successful people. The easier you get, easier it will go. Because फाउंडेशन आपकी उसकी बुनियादें नहीं होंगी. जो घर ऐसा बनेगा वो घर ऐसे ही जाएगा. फाउंडेशन खाली होंगी. इट टेक्स 20. बिल गेट्स की कामयाबी कहीं नहीं जाने लगे. मैकडॉनल्ड्स आज तक खड़ा हुआ है. KFC खड़ा हुआ है आज तक. होंडा मोटर कॉर्पोरेशन खड़ी हुई है. Why? Because it takes them about 50-60 years to be whatever they became. So they are very strong footings. So up 20 odd years, you need a lot of patience. And you need to be very sure. यहां पे जो नाकाम लोग हैं, they want to have quick rewards. Rewards like this. अभी मुझे मिल जाए कुछ. सुबह मैं वैसा बीज बोऊं, शाम को दरख्त बनाओ. और कल मैं इसके नीचे बैठा आम खा रहा हूं. तो वो चाइनीज ही मिल सकते हैं आपको ऐसे दरख्त जो वहां के. तो बड़े चाइनीज के बारे में लतीफे बड़े मजे मजे के बने हुए. एक बच्चा था, उसके अब्बू मार जाते हैं. दूसरा से कहता है तुम्हें कहा था ना चाइनीज अब्बू ना लेना. It's interesting. So Chinese, I have different opinion about Chinese product because Chinese are the people who can do anything for you. You go to them and say, I want to make a Jaguar, and they'll make a Jaguar for you. And you go and tell them, I want to have a cycle, they will make a cycle for you. So it's about the buyer. It's not about the Chinese product. हाँ, वो एक रहता बात है कि आप Chinese product जो पाकिस्तान में 10 रुपए की आई है, आप उसको उससे कंपेयर करना शुरू कर दें Chinese product जो कि अमेरिका में गई है 100 रुपए की, तो फिर आप कहेंगे यार Chinese quality is not good. But Chinese quality in America, Europe is excellent. I mean, better than anybody you can imagine. Even your own brand are produced by Chinese. So, I already told you that a man is beloved by Allah subhanahu wa ta'ala because he accepts the responsibility. So, I think you need to be responsible for the purpose of your life, your career and your ambitions. ये आपकी जिंदगी है, and only you are responsible for what you will make out of this life. Nobody else. So you accept the responsibility. घर वालों को बताएं, but you should have very clear purpose of your life and ambition. So you should need to accept the responsibility of achievement of your life, your behavior, your actions, your life and choices you make, you take decisions you take in your life, your relationship, your time, your moods, your emotions. Nobody should be able to make you feel anything. A person who is in control, और ये जो emotional intelligence क्या बुखार चढ़ा हुआ पूरी दुनिया को आजकल. What is this? ये इतनी ही पुरानी साइंस है जितनी कि पुरानी इंसान है. ये ओल्ड टेस्टामेंट में भी इसका जिक्र है, न्यू टेस्टामेंट में भी इसका जिक्र है, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है. और आप क्रेडिट किसको देते हैं? डेनियल गोलमैन, 1995, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट अ जीनियस गाय, सुभान अल्लाह. And he tells you successful people are those who have control over their emotions. You cannot make them do anything. They can control their emotions. They can choose their emotions. So, the same thing I am telling you, the successful people, they know their emotions, they know their mood, but they will never hold anybody responsible for the moods they have. हमारी हालत ये हाय उसने मेरा मूड ही खराब कर दिया. अम्मी मैं अच्छी खासी बैठी थी, आपने मेरा मूड तबाह कर. मैं सुबह में ध्यान नहीं देना, मेरा मूड खराब हो गया. ये हालत हमारे. ऐसे ही चलते फिरते कोई मूड खराब कर देता है. कभी केएससी मूड खराब कर देती है, कभी जरदारी साहब की स्पीच मूड खराब कर देती है, कभी कोई शाम को पटाखा बज जाता है उससे मूड खराब हो जाता है, कभी गाड़ी का गाना कोई ऐसा आ जाता है उससे मूड खराब हो जाता है. ये बड़ा बोरिंग सा गाना था, बोर ही कर दिया. अब मैं सुबह पढ़ूंगी, आपको अभी छोड़ो जाने. इतना फ्रेजाइल किस्म का हमारा मूड है. ऐसे गुजरते गुजरते कोई चेंज कर जाता है. गली में से किसी की गाड़ी में से गाना लग जाओ तो वो हमारा मूड ठीक भी हो जाता है. हाय मैं तो पढ़ रहा था, वो गली से उसने गाना ही ऐसा सुना दिया. हाय इट टुक मी समवेयर एल्स. ये हमारे मूड की हालत है, ये कैफियत है हमारे मूड की. इतना फ्रेजाइल किस्म का मूड, सुभान अल्लाह. तो आई थिंक दिस मूड ओनली यू कैन have the luxury of affording a mood like this. Successful people, I think, they are very cautious in the selection of how their mood and who should be the one who can change their moods. कि उनका मूड कौन चेंज कैसे करेगा, ऐसे नहीं चेंज होना चाहिए. The values you live with your life is your choice. You don't have to copy the values of your family, the values of society, values of the nation. It is your life. आपकी कब्र में और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कब्र में और किसी ने नहीं होना.
सुभान अल्लाह, शुक्र. दिस इज समथिंग विच गिव्स मी सो मच मोटिवेशन. वन ऑन वन बेसिस पे कॉन्फ्रेंस होगी फरिश्तों के साथ, वन ऑन वन. उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा मेरे अब्बा ने क्या किया, मेरी अम्मा ने क्या किया, उसने क्या किया और इसने क्या किया. इट्स मी. आपने क्या किया. मुझे कहीं किसी ने नहीं कहा कि आई नीड टू कंटिन्यू फॉलोइंग द वैल्यूज ऑफ माई सिस्टम, माई कंट्री, माई फैमिली, माई neighborhood, my brotherhood or anything of that type. It is my life, and I will choose the life and the values I would like to live with in my life. So how many of you have decided what those 5 or 6 values are with which you will like to live your life with? हाथ खड़ा करेगा. ऐसी 5 चीजें आपने कोई अपनी जिंदगी में 6 चीजें डिसाइड की हैं कि ये मेरी लाइफ की 5 वैल्यूज हैं. हाथ खड़ा कीजिए. 1 2 3 4 5 6. So if you don't know how you would like to spend your life, it's very interesting. I think this is one of the things which changed my life. I think that was the first thing. मैं आगे जाके उसको रिलेट करता हूं. सो आई थिंक अगर आप ओपरा को देखें, एक बच्ची निगर बच्चे अमेरिका के मुल्क में, न्यूयॉर्क में हो, कूड़े के ढेर से खाना खाती हो, सिंगल पेरेंट की हो, एंड सो गॉड मुझे तो बहुत खूबसूरत लगती है, लोगों को अगली लगती है, क्योंकि यू हैव टू फाइंड आउट द ब्यूटी. ये शी इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल and the richest woman now in the world, called Oprah Winfrey. And ये उसकी बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ओपरा विनफ्री एक स्लम एरिया न्यूयॉर्क से कूड़े के ढेर से खाना खा के, सिंगल पेरेंट, और वो भी पेरेंट उसके एडिक्ट हों ड्रग्स के ऊपर, रोज लड़ाई हो, चाइल्ड अब्यूज उस पर होता हो, स्कूल वो जा ना सकती हो, वहां से शी कैन बिकम व्हाट शी बिकेम. What is stopping you of becoming what you want to become? So that's what the life is all about. And I think that's exactly what I was talking to you earlier, कि आपको किसी ने इतनी जोर से पटखा नहीं है, मसख नहीं किया, जिसकी वजह से आपको इंटरनल जो मोटिवेशन चाहिए, जो बाउंस बैक की फैसिलिटी, वो ही नहीं आप में, बाउंस ही नहीं होते हैं. अच्छा सुबह करता हूं, फिल्म बड़ी अच्छी लगी हुई है ये तो देखो, सुबह बात करूंगा मैं आपसे, और फिर सुबह कभी नहीं आएगा. Okay, now the second trait of the successful people, passion. They live with passion. Passion is what? Anybody can define passion for me? Passion को define करा यार. जी. And then motivation, fine, excellent. What else? Dedication to your work. या कोई जरा खूबसूरत सा रोमांटिक किस्म की डेफिनेशन दो, क्या बोरिंग किस्म की डेडिकेशन. एनीथिंग एल्स? अच्छी है वैसे, लेकिन गलत नहीं है. जी. इश्क, हाँ, पागलपना, जनून, दीवानापन, ये आप शुरू ही ना लाइन आप सही है आपकी. क्रेज, पागलपन. जी. वो काम जो आप करके थके ना. फाइन. ओके. जनून, पागलपन, इश्क की कैफियत, उसे कहते हैं पैशन. ये एक वो ऐसी इरेशनल स्टेट है. इट इज टोटली इरेशनल स्टेट. Everybody asks you, it's a strong feeling or emotion, something that is desired intensely, but it is totally irrational but irresistible state. मैंने बस ये करना है बेटा, ये मुझे नहीं पता, मैंने ये करना. ये एक वो चीज है which changes the whole physiology of you. You know, you cannot hide that passion. Passion is something. Do you get tired of इश्क? हाथ खड़ा करें जरा, किसी ने इश्क किया है आप में से? और यार ये फिल्मी इश्क की बात नहीं कर रहा, सच्चे इश्क की बात कर. ये फिल्मी इश्क है जो आज चढ़ा कल उतर गया. तो नहीं, मुझे कल तक तो वो पसंद थी कैटरीना, नहीं आज मुझे ये पसंद आ गई. क्यों कैटरीना की नहीं अच्छी लगती यार? वो रात को देखो ना, कैटरीना के नाम से वो सैलाब आ गया उधर अमेरिका ना, मुझे नाम से ही नफरत हो गई. अब मुझे कोई और पसंद आ गई. जुनून, पागलपन, ये एक वो चीज है विच चेंजेस द केमिस्ट्री ऑफ योर बॉडी.
इट गिव्स यू सो मच एनर्जी, आंखें चमकती हैं, आवाज बदल जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. दिस इज समथिंग विच कीप्स यू ऑन योर फीट for 12 hours and you don't get tired. This is something which gets you out of the bistro in the morning like this. This is something which keeps you awake at 12 o'clock and 2 o'clock and you don't get tired. Because nobody would get tired of loving. आपका मसला ये है, आप पढ़ने जाते हैं and you get tired. आप नौकरी पे जाते हैं and you get tired. Any activity, it is not humane not to get tired if you are just performing an activity. अगर आप सिर्फ एक काम कर रहे थे, एक खाना, घरों की ख्वातीन के हवाले से एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक औरत खाने को मुसीबत समझ के पकाए और एक औरत खाने को इश्क समझ के पकाए, कुछ फर्क होगा जायके में? इसके बारे में सबको पता है. तो लिस्ट बहुत फर्क है. इसी तरीके से एक आदमी जिंदगी गुजारे पैशन के साथ, या दफ्तर जाए पैशन के साथ, या यूनिवर्सिटी में जाए पैशन के साथ, और दूसरा यूनिवर्सिटी में जाए मजबूरी के साथ. अब्बू ने कहा डॉक्टर बनना है, क्या मुसीबत है यार. जमीन आसमान का फर्क होगा. So the life without a passion is a fire without that light. ये एक ऐसा पैशन है which will do anything wonders for you. जिस दिन आपको कोई मारे और आपके नहीं आज मैंने कुछ करके ही दिखाना. क्या करना है आपको नहीं पता. Irrational, but irresistible. मुझे ये नहीं पता, but मैंने कुछ करना जरूर है. And you will find the way out. कहते हैं the best gift you can give to somebody have that create that willingness to do something. Willingness. Leave him totally uneducated, ignorant, incompetent, but सिर्फ अंदर आग लगा दो. और वो टीचर वो थे जो अंदर आग लगा दिया करते थे, कुछ नहीं देते थे, सिर्फ आग लगा. जिसको अंदर आपने आग लगा दी है वो किताब भी खुद ही क्रिएट कर लेगा, वो नोट्स भी खुद बना लेगा, वो इंटरनेट पे भी खुद ही बैठ जाएगा, वो बत्ती के नीचे सड़क पे जाके कहीं नोट्स भी पढ़ लेगा, तैयारी भी कर लेगा, वो सब कुछ खुद ले लेगा अगर वो आग है. और अगर वो आग नहीं है, उसके सामने लाके किताब भी रख देंगे, उसे कमरा भी दे देंगे, उसे टीचर भी बिठा देंगे, उसे ट्यूशन भी लगवा देंगे, उसे कुछ समझ नहीं आता. So that aag is so important, and that aag is called passion. The people who became somebody today, they were literally crazy. They wanted to do something. And later on they also got to know what. But it just started off with, I am sorry. I refuse to take this life anymore. I have to do something. Passion एक ऐसी चीज है, पूरी लाइफ बदल देता है आपकी. मैं आपको छोटी सी अपनी एग्जांपल, थोड़ा सा आप लोगों को हंसी भी शायद आ जाए, आपकी मर्जी की एग्जांपल देने लगा हूं. At the age of 16, I fell in love with my wife. And I come from a caste system which is I come from a family, or the caste system, which was, till the time I fell in love, very rigid in making relationships. Jat family, आपको पता है मौला जट की फिल्म आपने देखी होगी. So I announced, I fell in love with a girl who was sort of a Pathan. I don't know why, but that's how it occurred. So I went to my father, having a one-on-one dialogue with my dad. And he was very conservative dad. So he was given a chance. और मेरी already अपनी family में किसी के साथ मंगनी भी हुई थी. मुझे उस दिन पता बताया गया कि ये हो नहीं सकता. मैंने कहा जी क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि तुम्हारी मंगनी होगी. मैंने कब हुई, किससे हुई, किसको बता के? खबरदार बदतमीज बच्चा, ऐसे बोलते हैं बाप क्या कि मैं जी मैं तो पूछ रहा हूं किससे हुई. कोई लड़की ही है, कोई गधा है, कोई घोड़ी है, कोई बता. So
तो मेरे अब्बू ने मुझसे वन जेंटलमैन टॉक, जब सारे इमोशन सबड्यू हो गए, जब वो जज्बात गुस्सा ठंडा हो गया, तो हमने सोचा लेट्स टॉक वन ऑन वन, मैन टू मैन. एंड सो माय डैड स्टार्टेड, ये क्या होगा? मैंने कहा ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, वैसा होगा. मेरे पास हर चीज का जवाब था. मेरी आंखें चमक रही थी, मेरी जुबान से अंग्रेजी के वर्ड ऐसे बाहर निकल रहे थे. आई विल डू इट, आई नो दैट, आई डोंट नो. बट उसके बाद दुनिया बदल गई. 24 घंटे के बाद वालिद साहब आए, हमने सोचा है कि तुम्हारी बात मान ली जाए. मैंने कहा मैंने तो तैयार किया था, भी मैं छुरी पकड़ूंगा, कोठे पे जाऊंगा, छलांग मारने की धमकी दूंगा, ये कुछ हुआ ही नहीं. ये पहले ही मांग ली है. सो बाद में मुझे पता चला कि माय डैड वेंट टू माय मदर और उसको कहा मत रोकना इसे. आज जब मैंने इसकी आंखों में चमक देखी है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी. He knows what he's talking about. He is very clear-headed, and the kind of a confidence I've seen, just surrender. इस तूफान के आगे सब कुछ बह जाएगा, कुछ नहीं रुकेगा. आपको एग्जाम्पल दिया, पैशन क्या करता है. Nothing can stand that passion. You become totally crazy. पागल. आपने ये फिल्मों में वर्ड सुने हैं, नावलों में पढ़े, पागलपन. मैंने वो देखा है, वो कैफियत में से मैं गुजरा. आई नो दैट फीलिंग. आप ऐसे ऐसे फैसले करने, पागलपन, जुनून की हालत में. यू कैन नॉट इमेजिन. डू यू हैव द करेज ऑफ गोइंग टू अमेरिकन कॉन्सुलेट एंड आर्गूमेंट, गेटिंग इनटू आर्गूमेंट विद अमेरिकन कॉन्सुलेट? आई डिड दैट. I went to the American consulate. I need a visa. Who is this? My wife. Is she also going to become a student? I don't know. So why is he going with you? Because she is my wife. No, I'm sorry. I cannot give you the visa to your wife. I said, okay, fine, then don't even give me the visa. Sir, I'm sorry. I cannot let your wife go with you. So I said, I'm telling you, mister, that then I don't need the visa. Please keep it and give it to somebody else. Mister, do you know what you're saying? I said, yes, I'm very sure what I'm saying. Either you give 2 visas or you give visa to none. Okay, let me see. वो डर गया कि ये मारेगा मुझे अंदर खिड़की से निकाल के. Literally, that day in Lahore, उस वक्त लाहौर में कॉन्सुलेट होता था. That day, only 2 visas were given. Me and my wife. That is what passion can do. That is what, and this is something which will be seen by everybody. ये कहता हूं कि फिजियोलॉजी बदल जाती है, केमिस्ट्री बदल जाती है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एनर्जी लेवल चेंज. You don't know what it is unless you get into this. So there is a power. All those people who became the Tony Robbins, Anthony Robbins, high school dropouts. He claims to be now. He's a guy who has been offered PhD, honorary PhD in results. He's a guy. हाई स्कूल ड्रॉप आउट. मां ने बाहर निकाल के रात खाना के पैसे नहीं थे. एंड दैट वाज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस. ही सेड आई नेवर एक्सपीरियंस द पॉवर्टी एंड आई नेवर एक्सपीरियंस समथिंग व्हिच आई एक्सपीरियंस दैट डे व्हेन आई कुड सी आई हैव ओनली $20 which can help me survive only 2 days. So I have only 2 days to do something. Only 2 days to do something, and those 2 days change his life forever. He's a multi-millionaire guy today. And he became very passionate about something. I want to do something. I have to do something. Let me see what I can do. So he became literally, आपके ख्याल में, आपके शहर में KFC बैठा हुआ. Just imagine for a while, KFC exists today in your country because there was somebody totally crazy about this idea. Somebody who retired and having a first check. आपको ये कहानियां नहीं पता. हम लोग उनमें से हैं जिनके नाक के नीचे कुछ हो जाए हमें नजर ही नहीं आता. We don't see that. Do you? KFC में बैठे हैं. Wouldn't you like to know कि ये KFC कौन है, क्या इसकी हिस्ट्री है?
तो ये है वो क्यूरोसिटी के एलिमेंट, गौर फिक्र के एलिमेंट जो कि लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होता है। तो ये केएफसी की स्टोरी क्या है? द फर्स्ट चेक जो उसने पहला अपना रिटायरमेंट के बाद सोशल सिक्योरिटी का $99 का चेक उसको मिला, उसको देख के कहता है दिस इज नॉट द लाइफ दैट आई नीड, उसको भी फाड़ दिया। अकलौता चेक $99 का मिला हो और सुबह से लेकर शाम तक आप उस चेक को देखते रहें और उसके बाद उसको भी फाड़ दें, तो मुझे वो तारिक बिन ज़ियाद याद आया ये किस्सा पढ़ के कि ये जो $99 है ना, ये एक मोमेंट, ये एक लम्हा आया अंदर से, एक लम्हा आपने सोचा $99 और आपने किया कि अच्छा यार जेब में फोल्ड करके जेब में चेक अंदर रख लिया। अच्छा चलो मैं कल सोचता हूं, चले 2 दिन तो आपका पेट $99 से भर गया। अब ये जो फीलिंग गुजरी है, ये फीलिंग 2 दिन के बाद नहीं आएगी। ये अगर ये जो फीलिंग आई थी $99 इससे पहले कि ये चेक कहीं जाता, ये कुछ फैसला हो जाना चाहिए था। These feelings are so important.